It is like a personal rivalry of the Mr. Prime Minister with the chartered accountant, which starts from the demonetization. Both GST in its design and demonetization are weapons against small and medium business. स्मॉल पीपल एंड मीडियम पीपल उन लोग कंप्लायंस के बर्डन से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हैं. The corporate tax is coming down, whereas the tax collection from the individuals are going up. We are basically having a regressive tax system. It's bad for the country. It is like a personal rivalry of the Mr. Prime Minister with the chartered accountant, which starts from the demonetization. On 1st July 2017, which is called as Chartered Accountants Day, and Mr. Prime Minister was the chief guest at CA Institute at ICAI. तो वहाँ पे उन्होंने ओपनली एक फोरम पे बोला एट फोरम ऑफ ICAI पर कि ये जो मेरा पूरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट फेल हुआ है, it is all because of chartered accountants. What do you think was his goal? He himself was not clear what he wanted to achieve. I think the goal of demonetization was to cripple the small and medium businesses, to disturb the cash flow, so he could reshape India's economy and make it based on a couple of monopolies. And I think he was quite successful there. The number of small and medium businesses that were wiped out as a result of demonetization, both GST in its design and demonetization are weapons against small and medium business, and they have been extremely successful. जीएसटी से छोटा और मध्यम वर्गीय स्मॉल पीपल एंड मीडियम पीपल उन लोग कंप्लायंस के बर्डन से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हैं. सर, ये जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही है. ये जो GST है ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा देती है, उनके कैश फ्लो को डिस्टर्ब करके उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा देती है, और जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको इसका फायदा होता है. पूरा डिजाइन इसका यही है. Implementation of the GST, the working capital requirement has increased for the SMEs. Normal business cycle is of 90 days normally in our country. However, the businesses are required to deposit the tax in 40 days after effecting the sales. So basically what it is doing is it is crippling the economy. Why is it that there's not a very strong reaction from these people? पूरा देश भय में जी रहा है सर. मगर क्यों? हर आदमी को, जब बड़े बड़े लोगों को, नेता को, सबको जब ईडी से और इनकम टैक्स से डराया जा रहा है, तो एक छोटे से व्यापारी की क्या औकात है कि वो उनके सामने खड़ा हो जाए. और इनमें यूनियन में इतना दम नहीं है, छोटे व्यापारियों को यूनियन में इतना दम नहीं है कि वो आगे आगे कर सके. क्या आपको क्या लगता है GST को रिपील कर देना चाहिए? एक टैक्स होना चाहिए. स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए. The law is so poorly drafted that the burden comes on the people who complies with the law. आपके जॉब में सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है आपको? आज के टाइम में और पहले के टाइम में ये फ़र्क है सर. आज के टाइम में हमें साइन करने से डर लगता है. क्यों? कि कुछ गलती ना हो, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो चोर है या वो फ्रॉड करने जा रहा है. Now every NGO is looked at with a lens कि आप सब गलत हो, आप प्रूव करो कि आप ठीक हो. In this situation we need something from your side very strongly that you will stand with the NGOs. We need some kind of representation. We need grievance for them. We have amnesty scheme in income tax. We have amnesty scheme in GST. But when it comes to NGOs for their licenses, we are not giving them any relief. Whenever this government creates any law, ये सोच से बनाती है कि सब चोर है, आपको इसको पूरा कंप्लाई करके सही अपने आप को प्रूव करना है. ये मेंटालिटी क्यों है? पर ये तो एक्चुअली चोर की थिंकिंग है. सब चोर हैं, वो चोरी तो सोचता है. This government is demoting savings, which is a main pillar for the middle class families in India. I think what you're saying is very correct. And even demonetization in its own way destroyed the informal savings, so to speak. जो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को पे करते हैं दैट इज फ्रॉम द सैलरीड एम्प्लॉयड. अगर उसकी सैलरी है 15 लाख पर ईयर, राइट, तो उसका नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि अपने मंथ का 1 से 1.5 महीने की सैलरी वो एज पर टैक्सेस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहा है. और स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे अगर हम कहते हैं कि उसके साल के इतने एक्सपेंसेस हो गए होंगे, हमें यहाँ गवर्नमेंट से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं जो हमें मेडिकल वे में टेक केयर कर रही हैं, जो हमारा कह सकते हैं सीनियर सिटीजन्स को कुछ पे आउट कर रही हैं. बिकॉज दैट्स द रीज़न वी नीड टू सेव दैट अमाउंट. If you look at the direct taxes are two components. One is given by the corporates and given by the individuals. And if you take the collections over the past few years, you will find that the corporate tax is coming down, whereas the tax collection from the individuals are going up, which clearly signifies the government is only for the pro-rich. And indirect taxes also should going up. Yeah, indirect taxes, that's right. We are basically having a regressive tax system. Yeah, that's right.
These points you've raised, they're quite important points. They're important from your perspective, but they're also important from the job creation perspective and from the employment perspective. We are looking into these things. I think our position on GST is that we will probably change the GST and make it much simpler. Attempt to have just one tax slab. And the system is itself eating itself. This is not just bad for business, it's bad for the country.